Good morning, dear student. Happy to see you. So let's start today's EVS spread. In last spread, we have started second lesson. So many kinds of animals. Do you know? Remember? Okay. So mostly half of the lesson we have finished. Now remaining part of the lesson we are going to learn today. So what we have learned in last spread? Okay, let me revise. We have seen there are many different types of animals. Correct? Some animals stay on land while some stay in water. Different animals have different color, size and shape also. And after that, movements of animal also we have learned. Some animals can move quickly and swiftly, while some animals move very slowly. Right, everyone? Okay. After that, useful animals. Some animals are useful to us. For example, cat, buffalo, goat, cow, camel. And we keep such animal with love and care. And some animals are troublesome and nuisance. Troublesome and nuisance जो हमें trouble देते हैं. Mice. Yes ना? So remaining we are going to learn today. So have a look. We fly. See here. Birds have only two legs. They have two wings to fly. Their body is covered with feathers. See, birds have only two legs. They have two wings to fly. See, ये पंख दिखाई दे रहे हैं उड़ने के लिए उनको. Now, observe the picture carefully. There are differences in the flying ability of different birds also. अब सब बर्ड जो है स्काई में एक जैसे उड़ते हैं क्या? नहीं, उनकी क्या है एबिलिटी जो है सबकी डिफरेंट है. The eagle can soar high into the sky and stay in the air for a long time. See, eagle sky में ऊपर तक उड़ता है और long time तक रहता है. So it is opposite of it. See, but the cock does not fly high. ये इसके opposite है. cock क्या है? एकदम ऊपर तक नहीं उड़ता है. See, थोड़ा सा ही हाई रहता है और कम डाउन सून टू और इमीडिएटली क्या है नीचे आ जाता है. गॉट? नाउ कम टू द नेक्स्ट. वी लिव इन वाटर. नाउ गिव मी आंसर स्टूडेंट. हु लिव इन वाटर? यस, वेरी गुड. फिश लिव इन वाटर. सो हैव अ लुक. देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. फिश में भी अलग अलग काइंड्स रहते हैं ना. डिफरेंट टाइप्स के फिश रहते हैं कलरफुल. दे लिव इन द वाटर. फिश हैव फिन्स. They use their fins to move in water. There are scales on a fish body. See, they live in water. Fish have fins. See, ये क्या उसके सब fins है. They use their fins to move in water. और water में movement करने के लिए वो fins का use करते. And there are scales on fish body. Scales. See. दिस इज अ आई एंड गिल्स. तो क्या करते हैं? ब्रेथ करते हैं. फिश हैज़ गिल्स बिहाइंड इट्स आइज. फिश यूज देयर गिल्स टू ब्रेथ इन वाटर. वाटर में ब्रेथ करने सांस लेने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? गिल्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट. वी क्रीप एंड क्रॉल. मीन्स जो एनिमल्स क्या करते हैं? रेंगते हैं. Chameleons, house lizard and snakes are animals that crawl. They have scales on their bodies. See, chameleon, house lizard, snake. Observe this picture. Chameleons have house lizard have 4 legs, but these legs are very short. See, उन्हें भी 4 legs रहते हैं, but these legs how it is? वेरी शॉर्ट. बहुत छोटे रहते हैं. एंड द स्नैक डज नॉट हैव एनी लेग्स एट ऑल. जैसा आप सभी को पता है स्नैक सांप को लेग्स रहते हैं क्या? नहीं, वो क्रीप एंड क्रॉल करते हैं. सी, गॉट? नाउ कम टू द नेक्स्ट. सी, व्हाट आर दिस ऑल आर व्हाट? बटरफ्लाइज. और वी कैन से इंसेक्ट्स. बटरफ्लाइज हैव विंग्स टू. बट वी डोंट कॉल दैम बर्ड्स. बटरफ्लाई को भी विंग्स रहते हैं
बट हम इन्हें बर्ड्स कहते हैं क्या? नो, दे आर इंसेक्ट्स, दे आर स्मॉलर देन बर्ड्स, और वो बर्ड्स से भी क्या रहते हैं? स्मॉल रहते। बिसाइड दे हैव 6 लेग्स, सी, और उनके पीछे उन्हें क्या रहते हैं? 6 लेग्स रहते हैं। हियर एनिमल्स विच हैव 6 लेग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स। गेटिंग? रिमेंबर दिस वन, एनिमल्स विच हैव 6 लेग्स आर कॉल्ड व्हाट? इंसेक्ट्स। उन्हें इंसेक्ट्स कहते हैं जिसे 6 लेग्स रहते हैं। सो बटरफ्लाइज आर insects. For example, mosquitoes, houseflies and cockroaches are insects too. Mosquito, मच्छर, मक्खी and cockroach जो रहते हैं उन्हें क्या रहते हैं? 6 legs. See here. These all are what? Insects. Got? Now last one point. Do you know? Bats have wings but they don't have feathers on their body. बैट्स को भी क्या रहते हैं? विंग्स रहते हैं, लेकिन उनके बॉडी पे क्या नहीं रहते? फीदर्स. यंग वंस ऑफ बैट्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क. बैट्स आर नॉट बर्ड लाइक द क्रॉ, स्पैरो, पैरेट एंड कॉक. वो बर्ड्स है क्या? नो, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ द कॉ, टाइगर, डियर एंड माउस. गॉट ऑल ऑफ यू? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. सी हियर. Okay, last paragraph of this lesson. This was all about a few animals and we are familiar with, but there are many more animals in the world. अब हम लेसन में बहुत ही few animals के बारे में देखा है, but there are so many types of animals in the world. There are a lot of differences in the colors, in the shape and size of animals also. There are differences in the ways they move and the place they live in. These differences that we see among animals give rise to a lot of variety in animals. The number of animals that live in the sea is also very large. Sea means what? समंदर. अब समंदर में जो एनिमल्स रहते हैं उनके नंबर भी क्या है? बहुत सारे. There is great variety among them too. It is very interesting to learn about all such animals. Did you enjoy? Yes ना, enjoy किया ना लेसन में. एक है ना, so many types of animals, their size also different, color, shape. Now try to find more about them when you are older. Got all of you? Varieties in the rule in nature. Always remember what variety in the rule in nature. So I am giving you some animals and their characteristic revising. Have a look. See here. Animals that suckle their young ones. They have 4 legs, hairy body, external ears, for example, cow, dog and goat. Next one, animals flying. 2 legs, 2 wings, feathery body and, for example, birds. After that, animals staying in water. Scales on the body, gills for breathing, fins for swimming. For example, fish. And this one, animals that creep on land. 4 short legs or no legs. Scales on body, for example, lizard and snakes. And last one, what it is? Butterflies. Insects. 6 legs, some useful and some harmful. Useful butterflies and harmful mosquitoes, flies and cockroach. So got all of you? So today we have finished our second lesson of EVS also. And what is your homework? See here. This fill in the blanks. And after that, true and false. This 1, 2, 5, true and false. Match the following and name the following. This one you have to write in your notebook with answer. I will give you question answer. So you have to copy in your notebook proper. I hope so you have understood the lesson very well. So do your homework on given time and we will meet in next spread very soon. Till then, thank you. Have a good day. Take care and have a nice day. Bye bye.